नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। हळू चालणारी LRS प्रक्रिया, तपशिलांच्या नोंदणीसाठी तांत्रिक सूचना। डेंग्यूच्या रुग्णांसाठी यंत्रणा व्यायाम, विस्तृत क्षेत्र, प्रवास आणि जागरूकता। सतत चालणारे नित्यान्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे उत्तम नेते आहे, ज्यांच्याकडे असा चांगला विचार आणि दृष्टिकोन आहे। 3 वर्षापूर्वी आदिलाबादमध्ये नित्यान्नदानाचा कार्यक्रम हा सुरू झाला असून तो अव्याहतपणे सुरू आहे। प्रजासेवा भवन तेथील त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये शेकडो भुकेले लोक दररोज आपली भूक भागवतात, तर कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे आपले औदार्य दाखवतात। आपल्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून ते दररोज शेकडो लोकांना अन्नदान करत असून सर्वांकडून कौतुक आणि आशीर्वाद मिळवत आहे। आकली कడుపుకు మెతుకును వై ఆకలి తీర్చుతవో పోరాటాల జెండను వై సమరం నడుపుతవో ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను కట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కదన రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల बेकायदेशीर मांडणी LRSच्या या नियमाकरणीच्या प्रक्रिया नुकतीच जिल्ह्यात सुरू झालेली आहे व निवडक विशेष पथके फील्डच्या भेट देतात आणि अर्जाची तपासणी करतात। भूखंडधारकांनी अर्ज करताना दिलेले सेल क्रमांक कार्य करत नसल्याने तसेच काही अर्जावर मूळ क्रमांक नसल्याने असे भूखंड ओळखणे हे संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरलेली आहे। तर त्याच दरम्यान प्लॉटचा तपशील ज्या ॲपमध्ये टाकायचा आहे तो ॲप सर्व्हिसही डाऊन होत असल्याने तांत्रिक अडचणींची कमतरता नाही, त्यामुळेच ही प्रक्रिया पुढे जात नसल्याची टीका होत आहे। तर ही प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याचे दिसत आहे। तर आदिलाबाद ही नगरपालिकेच्या या अंतर्गत महसूल नगरपालिका आणि नगर रचना विभागातील 18 अधिकाऱ्यांना SRS ही अर्जाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील परीक्षेसाठी L1 म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे। तर त्याची 6 संघामध्ये विभागणीही करण्यात आली होती। प्रत्येक टीममध्ये संबंधित विभागाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे। 3ही अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे क्षेत्र पातळीवर जाऊन भाडेकरूंच्या भूखंडाची पाहणी करावी, तर प्लॉटचा फोटो नंबर, सर्वे नंबर आणि प्लॉटच्या सीमा हा तपासा आणि त्यांचा संपूर्ण तपशील SRS 2020 हे स्पेशल ॲपमध्ये टाका आणि L2 मध्ये अधिकाऱ्यांना पाठवा। तर दुसरीकडे LRS अर्जदारांना आवश्यक सल्ला आणि सूचना देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तसेच महानगरपालिका कार्यालयात विशेष मदत कक्ष ही स्थापन करण्यात आलेला आहे। संपर्क करून काही शंकाचे निरसन करता येईल असे ते म्हणाले।
प्रतिबंध करण्यासाठी कृती आधीच सुरू आहे। तर विशेषतः म्युनिसिपल क्षेत्रात डेंग्यूची लागण होऊ नये यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे। विशेष आराखडा तयार करण्यात आला असून त्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी नुकतेच म्युनिसिपल आरोग्य व विभागाच्या या अधिकारासमवेत नागरी कारवाईच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन अनेक सूचना केल्या। तर दुसरीकडे शहरातील प्रभाग 6 गटांमध्ये विभागले गेले आहे। प्रत्येक ब्लॉकने हे संबंधित विभागातून एक टीम लीडर निवडला, तर त्यांच्या नेतृत्वाखाली संबंधित विभागाचे कर्मचारी प्रत्यक्ष क्षेत्राला भेट देऊन व्यापक जनजागृती करत आहेत। आदिलाबाद म्युनिसिपल एकूण 49 वार्ड असताना आतापर्यंत अधिकृतपणे 34 डेंग्यू रुग्णांची नोंद झालेली आहे। तर ते अधिक अनौपचारिकही असण्याची शक्यताही आहे। तर त्यामुळे सतर्क झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना रोखण्यासाठी उपाययोजना सुरू केलेली आहे। म्युनिसिपल प्रशासनांतर्गत 5 आरोग्य केंद्रे आणि आदिलाबाद ग्रामीण मंडळांतर्गत अंकोली PSC आहे। तर प्रत्येक आरोग्य केंद्राखालील ही म्युनिसिपलचे वार्ड एकत्रितपणे एक ब्लॉक मानले जातात आणि 6 ब्लॉकमध्ये विभागले जातात। प्रत्येक गटात 7 ते 9 वार्ड असताना अंकोली प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 14 प्रभागाची निवड करण्यात आलेली आहे। संबंधित ब्लॉकमध्ये ताप कमी करण्यासाठी कारवाईच्या कृतीवर लक्ष ठेवायची संबंधित PSC वैद्यकीय आरोग्य विभागातील USC वैद्यकीय अधिकारी आणि म्युनिसिपल स्वच्छता निरीक्षक आणि मेपाचे समुदाय हे समन्वय CC यांना टीम लीडर म्हणून वागणूक दिली जात आहे। श्रीकृष्ण ही जन्माष्टमीच्या स्मरणार्थ अनेक शाळांमध्ये लवकर साजरे होत आहे। हे श्रीकृष्ण आणि गोपिकांच्या वेशभूषेत मुले नाचत असताना शाळेचा परिसर उत्सवाने गजबजून गेलेला आहे। राधाकृष्णाच्या या प्रतिमेची विशेष पूजा केल्यानंतर मुलांनी ही उटी मारण्याचा कार्यक्रमही केला। या कार्यक्रमाचे विशेष आकर्षण म्हणून मुलांचे तालावर नृत्य आणि या सोहळ्यातील उत्साही सहभागी पालक होऊन भारावून गेले। मुलांना सणाच्या वेगळेपणाची जाणीवही या उद्देशाने हा सोहळा मोठ्या थाटात पार पडल्याचे शिक्षकांनी सांगितले। मुलांनी उत्साहाने सहभाग घेतल्याचा आनंदही व्यक्त केला। आदिलाबाद शहरातील बुक्तापूर ईद मैदानावर स्वच्छता उपक्रम राबवण्यात आला आहे। तर म्युनिसिपल कर्मचाऱ्यांनी अतिवृद्ध तण आणि झाडाची झुडपे काढून स्वच्छता करण्यात आलेली आहे। म्युनिसिपल आयुक्त कमर अहमद यांनी स्वतः स्थानिक नगरसेवक आणि मुस्लिम अल्पसंख्याक ज्येष्ठांसह या कामाची देखरेख केली। अलीकडेच
बोक्कलगुडा येथील काही अल्पसंख्यानी आयुक्तांची भेट घेतली आणि त्यांना पावसाळ्याच्या ईदगाह परिसरात उगवलेली जंगली झाडे आणि ही झुडपांची समस्या भेडसावत असून ते काढून टाकून साफसफाई करावी अशी मागणी केली। जंगली वनस्पतीमुळे एखाद्याचा मृत्यू झाला की काही कबरे खोदण्यात यावी आणि वाहतूक खूप अडचणी येतात असेही ऐकले आहे। तर त्याला प्रतिसाद देत त्यांनी तात्काळ म्युनिसिपल कर्मचाऱ्यांसह साफसफाई केली। ईदगाह कमेटी की जानिब से जो भी ऑल पार्टी पर्सन्स है मजलिस बल्दिया को एक मेमोरेंडम दिया गया कि बारिश की वजह से यहाँ पर काफ़ी ये जंगली पौधे जो है वो ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से मैयत को लाने के टाइम पर दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए और कुछ करंट के कुछ प्रॉब्लम्स है, 1-2 पोल्स की ज़रूरत के लिए, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन दिए। इसके ज़िम्मन में आज जो है ईदगाह कमेटी को उनको राब्ता करके यहाँ पर ऑल पार्टीज़ जो ईदगाह कमेटी है उसकी वजह यहाँ पर देखा गया, पूरा जायज़ा लिया गया। ऑलरेडी यहाँ पर कल से कुछ लेबर्स को लगाया गया, लेकिन एरिया काफ़ी रहने की तरह ज़्यादा रहने की वजह से कल से कुछ और लेबर्स को इजाफा करके जो है यहाँ पर साफ़ सफाई का इंतज़ाम करने का काम शुरू किया जाएगा। बेला मंडळातील जुनोनी गावात जिल्हा लसीकरण अधिकारी त्यांच्यासह मंडळाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या डॉक्टरांनी गावात पर्यावरण स्वच्छता सोबतच जनजागृती केली। मलेरिया, डेंग्यू यासारख्या मौसमी रोगांचा ही प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधक उपाय म्हणून मंडळाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह गावात वैद्यकीय शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले होते। याशिवाय गावातील प्रमुख रस्त्यावरून फिरून स्वच्छतेबरोबरच जनजागृतीही केली। विशेषतः भांडी, कूलर आणि इतर ठिकाणाचे पाणी साचलेले ते काढून टाकण्यात आले, तर साठलेले पाणी घरात कुंडांमध्ये ठेवू नये असे सांगण्यात आले। दर 2 दिवसांनी पाणी बदला, नारळ, प्लास्टिक यासारख्या वस्तू घराभोवती ठेवू नका आणि ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी नाले स्वच्छ ठेवावे, नाल्यात पाणी साचणार नाही याची काळजी घ्यावी असा सल्ला दिला। ఫీవర్ సర్వేలో భాగంగా ఈరోజు జునోని గ్రామ పంచాయతీని సందర్శించడం జరిగింది। అలాగే ఇల్లు తిరగడం జరిగింది। కొన్ని చోట్ల మస్కిటో బ్రీడింగ్ పాయింట్స్ గుర్తించడం జరిగింది। మా బేలా మెడికల్ ఆఫీసర్ మరియు ఎఫ్ఎంఎల్ జిల్లా ఎఫ్ఎంఎల్ ఆధ్వర్యంలో గుర్తించడం జరిగింది। అలాగే కొంచెం కూలర్లలో బ్రీడింగ్ పాయింట్స్ చాలా ఉన్నాయి। ఇంటి యజమానులకి వాళ్ళకి దీనిపైన అవగాహన కలిగించడం కూడా జరిగింది। గుర్తించిన చోట్ల మా సిబ్బంది టెలిపాస్ తోటి స్ప్రే చేయడం కూడా జరిగింది। ఈ సందర్భంగా మన ప్రజలకి విన్నపం ఏంటంటే మీలో ఉన్నటువంటి మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పరిసరాలను శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం, తర్వాత నిల్వ వారానికి 2 సార్లు డ్రైనేజ్ చేసుకోవడం, మన దగ్గర ఉన్నటువంటి నిల్వ చేసినటువంటి నీళ్ళనంతా పారబోసి మళ్ళీ కొత్త నీళ్ళు పెట్టుకోవడం, దానివల్ల బ్రీడింగ్ పాయింట్స్ చాలా తగ్గుతాయి, మస్కిటో గ్రోత్ కూడా చాలా తగ్గుతుంది। కాబట్టి దాని ద్వారా జ్వరాల తీవ్రతను మనం తగ్గించుకోవడం జరుగుతుంది। కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ఈ జునోని గ్రామానికి వచ్చి కొంత అవగాహన కల్పించడం కూడా జరిగింది। అలాగే ఈరోజు కూడా ఇమ్యునేషన్ సెషన్ చేస్తున్నారు, దాన్ని కూడా మనం సందర్శించి ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది। టీకాలు అందరికీ ఉన్నాయా, ఈ రోజు ఎన్ని టీకాలు ఎంతమందికి ఉన్నాయి,
అందరికీ సక్రమంగా అందినాయా లేదా అందకపోతే वरच्या महाराष्ट्रासह जिल्ह्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे निर्मल जिल्ह्यात सारंगपूर मंडळामध्ये मुसळधार पुराचे पाणी शिरलेले आहे। जलाशयाची पूर्ण पाणी पातळी ही 1183 फूट होती तर ती आता 1183 फुटावर पोहोचलेली आहे। वरून 1500 क्युसेक पुराच्या पाण्याची आवश्यक झाल्यानंतर एकाच गेटमधून 2080 क्युसेस पाणी खाली सोडण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले। सुवर्णबागू पाणलोट क्षेत्रातील लोकांना सावध राहण्याचा सल्लाही देण्यात आलेला आहे। साई दीक्षा सेवा समिती लक्काडीचे अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी यांनी सांगितले की श्रावण मासाच्या या निमित्ताने या महिन्याच्या 26 तारखेला निर्मल जिल्हा केंद्रातील नटराजनगर शिवमंदिरातून 8व्यांदा ही पापहेश्वर स्वामी मंदिरापर्यंत पादयात्रा निघणार आहे। निर्मल जिल्हा केंद्रातील श्री गांधी रामनाथ दत्तसाई मंदिरात शनिवारी या प्रमाणामध्ये म्युरल्सचे प्रकाशन करण्यात आलेले आहे। तर ते म्हणाले की जगाच्या कल्याणासाठी निर्मल गेल्या वर्षापासून 7 वर्षापासून जिल्हा केंद्रातून ही महापादयात्रा काढत आहे। तर या पादयात्रेत मोठ्या संख्येने भाविकांनी सहभाग घेऊन कार्यक्रम यशस्वी करण्याची विनंती त्यांनी केली। శ్రావణ మాసం పురస్కరించుకొని గత 7 సంవత్సరాలు విభజన చేసుకొని మరి ఇది 8వ సంవత్సరం మరి కోరిన కోరికలు తీర్చే శివుడు ఆ సాయినాథుడి అనుగ్రహంతో మరి 8వసారి పాదయాత్ర మీరందరూ పాల్గొని మరి మన కష్టాలు ఏమున్నా ఆ భగవంతుడి సన్నిధిలో మనమందరం పాదయాత్ర ద్వారా వెళ్ళి మరి ఆ భగవంతుడి అనుగ్రహం వల్ల మనం అందరం బాగుండాలి, అష్టైశ్వర్యాలు ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని సంకల్పంతో లోక కళ్యాణాన్ని నిర్వహించే ఈ పాదయాత్రలో మీరందరూ పాల్గొనాలని మరి శివుడి దర్శనం తర్వాత అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది। మరి ప్రతి సంవత్సరం మూర్తి నష్టం గారు తాను ముందుండి ఈ సేవా కార్యక్రమంలో పాల్గొని మరి ప్రతి ఒక్కరికి అన్నప్రసాదాన్ని అందించడం జరుగుతుంది। మరి తిరుగు ప్రయాణంలో బస్ సౌకర్యం ఉంటుంది కాబట్టి మీరందరూ ఈ పాదయాత్రలో పాల్గొని ఆ शिवुडे साईबाबा अनुग्रह पोहोचाలని కోరుతూ निर्मल जिल्हा केंद्रातील अनेक सरकारी आणि खासगी शाळांमध्ये शनिवारी श्रीकृष्ण अष्टमी अगोदरच साजरी करण्यात आली। तर यावेळी राधाकृष्ण यांच्या प्रतिमेचे विशेष पूजन करण्यात आले। लहान मुलांनी घातलेली ही राधा आणि लहान कृष्णाची वेशभूषा ही खूपच आकर्षक ठरली। त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी जोरदार ही आनंद साजरा केला। शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना कृष्णाष्टमी सणाचे वेगळेपणही समजून सांगितले।
प्रदेश सध्या भीषण पुराच्या प्रभावाखाली आहे। सततधार पाऊस आणि पूर आणि भूखंडामुळे ही जीवस्त आणि मालमत्तेची गंभीर हानी झालेली आहे। लाखो लोक बेघर झालेले आहे। यावेळी अब्दुल अजीज यांनी उम्मीद फाउंडेशन आणि त्यांच्या टीमच्या सहकार्याने वायनाड पूरग्रस्तांच्या या मदतीसाठी जमात इस्लामी हिंदूच्या सदस्यांना 10,000 रुपये रोख म्हणून सोपवण्यात आले आणि त्यांनी त्यांचे औदार्य दाखवले। अल्हम्दुलिल्लाह के उम्मीद फाउंडेशन से 10,000 रुपये नकद केरला रिलीफ फंड के लिए उम्मीद फाउंडेशन से दिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के उम्मीद फाउंडेशन से 10,000 रुपये नकद केरला रिलीफ फंड के लिए उम्मीद फाउंडेशन से दिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के उम्मीद फाउंडेशन से 10,000 रुपये नकद केरला रिलीफ फंड के लिए उम्मीद फाउंडेशन से दिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के उम्मीद फाउंडेशन से 10,000 रुपये नकद केरला रिलीफ फंड के लिए उम्मीद फाउंडेशन से दिए जा रहे हैं। आदिलाबाद जिल्ह्याच्या बाहेरील कव्वाल अभयारण्यामध्ये वाघ दिसला। तब्बल 2 वर्षांनंतरही वाघ न सापडल्याने वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून आनंद व्यक्त केला जात आहे। तर अलीकडे जन्नाराम रेंजच्या या जंगलात गोंडगुडा ही उपनगरात चरत असताना वाघाने जखमी झालेल्या गायीच्या बछड्यावर हल्ला केल्याचे अधिकाऱ्यांना समजले। एकही वाघ नसलेल्या या अभयारण्यामध्ये वाघ घुसल्याच्या घटनेने वन विभागामध्ये आनंद उत्सव साजरा करण्यात आला आणि उद्यानपेल्ली आणि तल्लापेटच्या या जन्नाराम वन परिक्षेत्रामध्ये वाघाच्या खुणा शोधण्यासाठी अथक प्रयत्न केले जात आहे। तर पावलांच्या ठशाच्या आधारे हा वाघ अलीनगर, गोंडपल्ली आणि मल्याण फॉरेस्ट बीटमध्ये फिरत असल्याची ओळख पटलेली आहे। तर दुसरीकडे वाघाच्या हालचाली सीसी कॅमेराच्या या टिपल्या जाते आणि तपशील समोर येईल असा दावा अधिकाऱ्यांनी केलेला आहे। अनेक वर्षापासून कव्वाल टायगर झोनमध्ये वाघाचे आगमन झाल्याचे वन कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये आनंद व्यक्त होत आहे। वाघांच्या संवर्धनासाठी दरवर्षी कोट्यवधीचा निधी खर्च केला जात असतानाही एकही वाघ या ठिकाणी स्थिरावलेला नाही। त्यामुळे वर्षानुवर्षे वन विभाग चिंतेचे वातावरण आहे। आसिफाबाद जिल्ह्यात आठवडाभरापूर्वी गुरे मारून खळबळ उडवून देणारा हा वाघ आपल्या आदिवासी फिरत आहे आणि अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की हा वाघ तंदूर, कैरीगुडा आणि रेबेना राष्ट्रीय महामार्ग 363 मार्गे कव्वाल अभयारण्यात प्रवेश केलेला आहे। तर शिकारीसाठी योग्य अधिवास आणि मोठ्या प्रमाणात वन्य प्राणी असल्याने वाघाचा येथे वास्तव्य होईल असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। हळू चालणारी LRS प्रक्रिया, तपशिलांच्या नोंदणीसाठी तांत्रिक सूचना। डेंग्यूच्या
रुग्णांसाठी यंत्रणा व्यायाम, विस्तृत क्षेत्र, प्रवास आणि जागरूकता. सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेंचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.